Bismillahirrahmanirrahim. The project we are doing is Dastkaar and it is supervised by Mohammed Shabbir Hassan. So the project team includes Hassan Hanif, me myself as Sulieman, Shah and Mirza Usama Haider. To table of contents we will be discussing in our presentation is opportunities and stakeholders, existing systems, problem statement, endeavor, and system, which includes system requirements, design summary, implementation summary, testing and evaluation, and finally the conclusion and outlook. Opportunities and stakeholders. So in Pakistan, the household industry holds very importance as important position as rural setup, as many families depend on handicraft business. अब पाकिस्तान में पिछले 10 से 15 सालों तक बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट वगैरह की मार्केट में ग्रोथ हुई थी, जिसमें यूके और यूएसए वगैरह जो है उनमें पाकिस्तान के हैंडीक्राफ्ट की बड़ी डिमांड थी. इसी तरह ट्रेडिशनल हैंड वूवन, एम्ब्रॉयडरी वर्क और ब्रास वेयर्स की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में. और पाकिस्तानी कल्चर में भी आर्टिजन्स वगैरह जो हैं बहुत उनकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो आर्ट एंड क्राफ्ट्स के कल्चर को मेंटेन करते हैं. और बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिजन्स हैं जो कि अपनी जो है लिविंग अर्न कर रहे हैं इसी बिजनेस के थ्रू, हैंडीक्राफ्ट की सेलिंग और बाइंग. और अराउंड 80% ऑफ द हैंडीक्राफ्ट जो है सिंध और जो है पंजाब के लोअर पंजाब में क्रिएट होते हैं. और मैनी आर्टिजन्स ऐसा वर्किंग एज लोकल बिजनेस, और उनके स्मॉल बिजनेस स्केल पे बहुत सारे आर्टिजन जो है अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं. सो बेसिकली हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो 3 हैं. एक आर्टिजन है, कस्टमर है, एडमिन है. आर्टिजन बेसिकली हमारे जो हैं वो प्रोडक्ट्स वगैरह की लिस्टिंग करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ गिग्स और कस्टम ऑर्डर्स वगैरह कस्टमर से लेकर. कस्टमर का काम है कि वो उन्हें आर्टिजन्स को वो फाइंड करेंगे, उनसे प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी उनकी पर्सनल लाइकिंग होगी वो प्रोडक्ट्स उनसे खरीद सकेंगे. और कोई अगर उनको सर्विसेज चाहिए प्रोडक्ट्स के अलावा तो वो उनकी गिग्स पे ऑर्डर कर सकते हैं. और अगर गिग्स पे अगर उनको कोई इस तरह की सर्विस ना मिल रही हो तो वो कस्टम ऑर्डर भी कर सकते हैं. इसी तरह फिर एडमिन होंगे, जो एडमिन जो सारा देख रहे होंगे निज़ाम उनका. अगर कोई भी आर्टिजन वगैरह को वो ब्लॉक कर सकते हैं, अगर कोई रिपोर्ट्स उनके पास हैं किसी गिग के हवाले से तो वो उनको उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं और सारा उनकी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं. एग्जिस्टिंग सिस्टम में हमने जो डिफरेंट सिस्टम्स को स्टडी किया उनमें मिसी है, स्पून फ्लावर है, एटसी, अमेजॉन हैंडमेड है, आर्ट फायर है, वसीला और हैंडमेड आर्टिजन. इन सिस्टम में कुछ चीज़ें जो हमने नोटिस की वो गिग्स थी कि गिग्स उनमें इन सिस्टम्स में नहीं हमें मिली क्योंकि सर्विसेज वगैरह तो प्रोवाइड नहीं करते, वो सिर्फ जो है प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे थे. ईमेल अलर्ट्स का कुछ सिस्टम में था और कुछ सिस्टम में नहीं था. और अकाउंट वेरिफिकेशन, कुछ सेलर्स जो हैं वो अकाउंट्स उनके वेरीफाइड होते थे, कुछ जो है सेलर्स के अकाउंट वेरीफाइड नहीं होते थे. और ऑर्डर इफेक्टिव ऑर्डर मैनेजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं आर्टिजन्स को अपने सिस्टम के थ्रू, तो वो भी किसी सिस्टम में लैग करता हुआ हमें नजर आया. और बेसिकली जो कस्टम ऑर्डर का जो इशू है कि वो जो कस्टमर है वो बिल्कुल अगर उनको कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है तो वो उनसे कस्टमर्स जो है आर्टिजन से ले सकते हैं कस्टम ऑर्डर के, तो वो भी हमें इस तरह डिटेल में देखने को नहीं मिली. प्रॉब्लम स्टेटमेंट. So following are some of the problem statements that artisan commonly face. As artisans हमने कहा था कि वो लोअर पंजाब और सिंध में डिफाइन करते हैं, यानी कि अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह लेते हैं. तो इस तरह वो आर्टिसन जो है उनको सेल करने में प्रोडक्ट्स को मुश्किल पेश आती है रीजनेबल रेट्स के ऊपर, और उनको फेयर शेयर नहीं मिलता लोकल बिजनेसमैन के साथ काम करने में. और थर्डली है कि उनके पास कस्टमर के पास लिमिटेड चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट डिज़ाइन होते हैं, क्योंकि उनको जो पर्सनल लाइकिंग होती है उसके लिहाज से वो कस्टम ऑर्डर वगैरह नहीं कर सकते. तो ये हमने एक लूप होल देखा जिस पे हमने काम किया. एक्सेस एंडेवर. So in Endeavor, we created a team plan, and in this table you can see as we have team members and responsibilities, and I have as you can see that I work on documentation, front end, proofreading, and checking and prototyping. Hassan Hanif has worked on prototype, back end, and testing, and Mirza Usama has done work on documentation, front end, testing, proof and reading, and checking and prototyping.
इसमें आप इस टेबल में जैसे आप देख सकते हैं कि हमने एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसकी इनपुट्स और आउटपुट्स क्या होंगे, और हमारे हमने टीम में डिवाइड किया हुआ था काम, तो इसलिए हम कोई भी मुख्तलिफ जो ग्रुप होता था, कोई भी एक्टिविटीज़ होती थी, उसको कोई ना कोई पर्सन लीड करता था, और जो पार्टिसिपेंट होते थे उसमें वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे। जैसे पहली कोई आप एग्जाम्पल ले लें, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हसन हनीफ ने लीड किया था, और मिर्ज़ा, उसामा और मैं जो हूँ उसके अंदर पार्टिसिपेंट से। इसी तरह फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को गैदर इलिस्ट्रेशन करने के लिए मिर्ज़ा उसामा ने हमको लीड किया था, और हम दो सुलेमान और हसन, हम दोनों ने जो है उसको उसके एक्टिविटीज़ के अंदर परफॉर्म की थी चीज़ें। इसी तरह यूज़ केस आइडेंटिफिकेशन, डिटेल्ड यूज़ केस डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल्ड यूएमएल डायग्राम्स में पार्टिसिपेंट्स भी थे, और जिन्होंने लीड किया था वो भी। नेक्स्ट प्रोटोटाइपिंग आ गई, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आ गई, इम्प्लीमेंटेशन होगी, और वाइबर टेक्सिंग। तो वे ऑफ वर्किंग ऑफ हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी जो यूज़ की थी वो एजाइल मेथोडोलॉजी थी। उसके अंदर हमने जो कोलैबोरेशन की थी कि हमने ऐसा एक प्लान क्रिएट करते थे, तो उस प्लान के मुताबिक हम अपने टास्क को डिकम्पोज करते थे, और फिर उन टास्क के लिए फिर हम उनके यूज़ करते हुए हम उनके ऑब्जेक्टिव्स और माइलस्टोन सेट करते थे, और जब वो टास्क की कंप्लीशन वगैरह हो जाती थी, फिर हम जो डिलीवरेबल होते थे उनको हम डिलीवर करते थे, जो भी हमारे लीड कर रहे होते थे उस एक्टिविटीज़ को, और उसको हम बैठ के रिव्यू करते थे, और जो भी प्रॉब्लम्स या चेंजेस आते थे उसको डॉक्यूमेंट कर लेते थे। इसी तरह जब कम्युनिकेशन होती, जब हमें टास्क वगैरह मिलते थे, तो हम डेली बेसिस पे भी कम्युनिकेशन करते थे, और वीकली बेसिस पे भी, और ज़्यादातर हम यूज़ MS टीम्स यूज़ करते थे, और मैसेंजर और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी चेंजेस वगैरह होती थी, जो भी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करी थी, या जो भी हमने आगे कोई कुछ प्लान करना होता था, तो हम उसके ज़रिए कम्युनिकेट करके और टास्क वगैरह या और प्लान्स वगैरह हम एक दूसरे को बताते थे, और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयरिंग इसी तरीके से होती थी। सो रिक्वायरमेंट समरी, रिक्वायरमेंट लिस्टेशन में हमने बेसिकली 3 टेक्निक्स इस्तेमाल की, जिसमें इंटरव्यूज़ हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, प्रोटोटाइपिंग है। प्रोटोटाइपिंग है बेसिकली हमने जो भी प्रोटोटाइप बनाई थी उसके थ्रू हमने यूज़र की फीडबैक ली थी, स्टेक होल्डर्स की सारी फीडबैक ली थी, जिससे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी मिली, और जो हमने वो अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट की। Some of the functional requirements that we have illustrated are 46 functional requirements, and non-functional requirements, that is usability in terms of learnability, and we have identified 34 use cases so far. In the design summary, we use architecture designs and use case diagrams, fully dressed use cases, and schema, that is we use no SQL, non-relational database, and activity diagrams, and we have created component diagram and deployment diagram also. In developing Dastkaar, we use the following technology, that is Stack, that includes MongoDB, Express for front end, React.js, and backend Node.js. HTML5 and CSS3 for prototyping, Material.io and Bootstrap, we use it also for prototyping. Tools we use in creating the project are VS Code, most importantly Postman, and GitHub, Sublime Text for creating prototype, Draw.io, VL Paradigm in creating flowcharts and other stuff in testing phase of our project. And coding standards and best practices, we use the Node.js coding standards as listed in the GitHub, and they followed their guidelines. And also the React.js coding standards, we have also followed the React.js guidelines, and we have shared the link of that also. And as far as developmental standards are concerned, we use 4 developmental standards, such as iterative development of a project, requirement management, and component based architecture. We divide different components and work on that component, particular focus on that particular component that is more important. And change control, as changes are very important part of a project and can occur anytime, so we focus on that change, and we assess it and plan accordingly, and create that changes in our project. Lastly is the testing and evaluation summary, and we use 2 techniques, that is black box and white box. In black box testing, we create test data. From that we create flowcharts, test case scenarios, and then we create test case designs. And in white box testing, we have made control flow graphs, and we found from that we found cyclomatic complexity, and created 4 charts, and then
done all the path coverage, and from that we created test data. Conclusion and outlook. So doing finally a project, we came across many challenges such as the COVID-19 issue and workplace issue, collaboration issues due to the pandemic ongoing situation, and we came to know the importance of effective project management, जो कि हमें बहुत ज़्यादा यानी कि इससे हमें पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी को मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेजमेंट, और कितना इफेक्टिव होता है किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। और एक्टिविटीज़ जो हमने परफॉर्म की उनसे हमें बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। उसके रिजल्ट ये निकला कि हमारे स्किल्स वगैरह भी बड़े इम्प्रूव हुए, हमें एक्सपीरियंस हासिल है कि किस तरह सिचुएशंस और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, किस तरह स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल करना है, और किस तरह एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। सो लास्टली जो है एक हमारा जो है एज नोबडी इज़ परफेक्ट, सो हमारे जो है प्रोजेक्ट में इम्प्रूवमेंट्स भी हैं, ज़रूरत है उनमें इम्प्रूवमेंट, और इन फ्यूचर जो है हम उन इम्प्रूवमेंट्स में काम करने के लिए भी तैयार हैं, और इंशाल्लाह उन इम्प्रूवमेंट्स को जो है उसके अंदर और प्रोजेक्ट के अंदर और इम्प्रूवमेंट्स और यानी कि बेटरमेंट लाने के लिए हम वर्क करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।